So in the last class, we started off with nutrition. हम लोग इस topic के अंदर we were combining two topics. We were combining nutrition and mammals. At the same time, we are discussing biological molecules. ठीक है? Nutrients ही हैं तो it's easy to do them in a combination. खैर, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई we have 8 different classes of nutrients. What are nutrients? Nutrient or biological molecules? They are those molecules which organisms need to survive, or without at least one of them you cannot have a living organism. वो कौन कौन से थे? We had carbohydrate, fats, lipids, proteins, polynucleotide, vitamins, mineral ions, fiber और water. हम लोगों ने कहा था कि जब भाई शुरू के तो चार फाइव द फर्स्ट फाइव nutrients that we have, or biological molecules that we have, the carbohydrates, lipids, proteins, polynucleotides and vitamins, they are all organic molecules. What are organic molecules? Molecules that are made up of carbon, hydrogen and oxygen, right, along with other substances, usually majorly carbon और hydrogen से बने हुए होते हैं. uh, शुरू के हमारे पास we need to know the chemical elements in the first four of them: carbohydrates, fats, proteins, polynucleotides. इन चारों के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हमेशा होंगे. वो कौन से होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस एक्स्ट्रा होता है. Right? So how are we going to remember them in a series? We're going to be like oxygen, oxygen, and all of them. Proteins, in proteins only nitrogen, and in proteins only nitrogen, and in polynucleotides we're also going to have uh, phosphorus along with the nitrogen. फिर हम लोगों ने बात करी थी. Umema, can you hear me now? Is my voice audible, by the way? Yes. All right. अच्छा. अच्छा, आई थिंक उमैमा ने अपना माइक कनेक्ट नहीं करा हुआ. अच्छा जी. नाउ हम लोगों ने भी स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स. हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, राइट? शुगर्स को लैटिन के अंदर वी कॉल देम सैकेराइड्स. Now if I'm going to have the monosaccharides, if I'm going to have the monosaccharides of the carbohydrates, I'm sorry, if I'm going to have monomers of carbohydrates, I'm going to call them monosaccharides, राइट? सिमिलरली अगर मैं दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन अप कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक डाइसैकेराइड मिलेगा. सिमिलरली अगर मैं बहुत सारे डाइसैकेराइड या फिर if I'm going to join up, let's say, many monosaccharides together, it's going to give me polysaccharides. ठीक है जी. तो हम लोगों ने पिछली बात ये करी थी. उसके अलावा what we started off with was कि भाई अच्छा हमारे पास ना मोनोसैकेराइड्स बनाने का तरीका क्या होता है? What is the way through which we can make monosaccharides? हमने कहा कि भाई I can, to make a monosaccharide I need at least 3 carbons, या ज़्यादा से ज़्यादा I need how many carbons? ज़्यादा से ज़्यादा I need about 7 carbons, right? And the formula that we have is CnH2n, right? अच्छा, अब NH2n का मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन्स होंगे उतना ही H2O होगा. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की. पेंटोज शुगर्स आर दो शुगर्स विच हैव 5 कार्बन्स. तो अब मेरे पास N की जगह क्या आ जाएगा? 5. तो फॉर्मूला क्या हो गया? C5H2 है, राइट? तो 2 5s आर 10. O1 है, O1 5s आर 5. तो इस तरीके से हम लोगों ने भी जस्ट डिस्कस दीज क्लासेस. अगर हम लोग की क्लासेस याद नहीं रखे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. इट डज नॉट मैटर दैट मच. खैर खैर. अच्छा जी. अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है. अब दूसरी बात हमारे पास क्या होती है? नाउ द सेकंड थिंग दैट वी हैव इज कि भाई what are hexose sugars? We were only talking about the hexose sugars. So what are hexose sugars? They are those sugars which have 6 carbons. So hexose sugars are those sugars which have how many carbons? That have 6 carbons.
हाँ, अब मेरे पास हेक्सो शुगर्स के 3 मोनोसेक्राइड्स होते हैं. हाउ डू वी रिमेंबर देम? GFG. We have glucose, we have fructose, and we have galactose. Why are we calling them as hexose sugars? Is because all three of them, they contain 6 carbons. They contain 6 carbons. And since they contain 6 carbons, उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6. बात ही आती है कि sir, if they have the same formula, right? So if they have the same formula, why are we giving them different names? What's the point of giving them different names? तो भाई हमने कहा कि अच्छा फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफरेंट होता है. बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं. Since they have different chemical properties, they are given different names, right? So we talked about the three monosaccharides, right? तो हम लोगों ने कहा था भाई हमारे पास monosaccharides कौन कौन सी हैं. हमने कहा था भाई the monosaccharides that we have are glucose, fructose, galactose, right? अच्छा, now if I would want to join up, if I'm going to join up two monosaccharides together, what am I going to get? I'm going to get a disaccharide. All right. Now, so what I decided was, मैंने कहा यार मैं सबके अंदर ना ग्लूकोस ऐड कर देता हूँ. तो अब मैंने क्या देखा कि भाई if I'm going to add a molecule of glucose to another molecule of glucose, the products that I'm going to get is the disaccharide maltose along with the molecule of water. Similarly, if I'm going to join up glucose with fructose, I'm going to get a disaccharide called as sucrose along with the molecule of water. And when I'm going to join up galactose with glucose, the disaccharide that I'm going to get will be called as lactose along with the molecule of water. ये water molecule क्यों निकल रहा है हमारे पास? Is because whenever we join monomers together, the process through which they join up is called as condensation. जब भी हमारे पास condensation होगी, the molecules are going to join up and they're going to release a molecule of water. So once again, एक बार जल्दी से, we know 6 carbohydrates by name. We have glucose, fructose and galactose as our monosaccharides. ये 3 monosaccharides हो गई. 3 और हमारे पास disaccharides आ जाएंगी. तो if I could name 3 monosaccharides and 3 disaccharides, I can name 6 carbohydrates, right? So the monosaccharides for glucose, fructose, galactose. If I'm going to join up 2 molecules of glucose together, it's going to give me a molecule of maltose. If I'm going to join up glucose plus fructose, it's going to give me sucrose. If I'm going to join up galactose with glucose, it's going to give me a molecule of lactose, right? Now, similarly, if I would look at the chemical formula, all these monosaccharides, they were hexose sugars. तो तीनों का फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, C6H12O6. So what I'm practically doing is I'm joining 2 molecules of C6H12O6 together. I'm joining 2 molecules of C6H12O6. ठीक है? अब जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, मेरे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C6H24O12, right? 6 plus 6 is 12. 12 plus 12 is 24. 6 plus 6 is 12. Equation balanced है. लेकिन I also have to release a molecule of water. If I'm going to add water to it, equation के अंदर एक imbalance आ जाएगा. तो इस वाटर को बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए. Where are those hydrogen atoms going to come from? They're going to come from here, from the disaccharide itself. तो वो 24 था, अब क्या हो गया? 22. एक ऑक्सीजन चाहिए मुझे वाटर बनाने के लिए, तो ये O12 था, अब क्या हो गया? O11.
यहाँ तक कोई मसला? So this is so what we did in the last class. अगर मैं तेज भाग गया तो कोई मसला नहीं है, we'll have the recordings. Is there any problems या कोई ऐसी चीजें समझ में नहीं आई हो अभी तक? Any problems at all? Okay. Sir, जी जी बच्चे बोलो, किस बात? sir, so you mean that when disaccharides are formed, so हम्म, they undergo the process of condensation. बिल्कुल. So it also happens for like C12 and H22O11, that one at the last. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला जो है C6H12 वो 26 मेरा बच्चा, ये किसका फॉर्मूला है? Hexose sugars. Very good. All the monosaccharides that we are discussing, this glucose, this fructose, this galactose, ये कौन सी वाली शुगर से बिलोंग करते हैं मेरा बच्चा? मोनोसैकेराइड हेक्सोस शुगर से बिलोंग करते हैं. Abdullah, is that your question as well? What I was calling the monosaccharides? देखो देखो देखो, इस बात में कंफ्यूज मत होइए. ये हेक्सोस और ट्रायोस शुगर वाली चीज में, इसको दोबारा गौर से सुनो. It's not a very complicated thing, it's a very easy thing. All those monosaccharides that are going to have a formula C6H12O6, वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करती होंगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से भाई, माय सरनेम इज अब्दुल जब्बार, राइट? So all the other Abdul Jabbar immediately they would belong to my family, right? So all rather in other words, all my siblings are going to share the same surname. ठीक है? So let's say भाई, if if one of my siblings are going to have offspring, तो वो भी कहेंगे okay this is from the prodigy of the of Abdul Jabbar. Do we get this? तो इसी तरीके से वो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ना हमारे पास, जिनके पास 6 कार्बन होंगे, उन सारे मोनोसैकेराइड वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते होंगे? हेक्सोस शुगर से. ये कॉन्सेप्ट है. अब बात समझ में आई मेरा बेटा? Yes, sir. Thank you. ऑलराइट अब्दुल्ला, डू वी गेट दिस? ओके, अच्छा. अब होता क्या है, एक बस एक आखिरी बात, वन लास्ट टाइम, वन लास्ट थिंग. इफ आई वुड वांट टू कन्वर्ट दीज डाइसैकेराइड्स बैक इनटू मोनोसैकेराइड्स, फिर मैं क्या करूंगा? मैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा. This whole process is going to now go in reverse. Obviously, you need enzymes to, let's say, carry this reaction out as well. When देखो फॉरवर्ड, जब मैं मोनोसैकेराइड्स को ऐड कर रहा था ना, तो मुझे डाइसैकेराइड और वाटर मिल रहा था. तो these were my products and these were my reactants. But and this forward process was called as condensation. But now what I want to do is I want to reverse the process. So what I want to do is I want to add the disaccharide, add water molecules to disaccharide and break them down into monosaccharides. To do that, I would carry out the process of hydrolysis. Lysis का मतलब होता है breakdown. Hydro refers to water. तो hydrolysis would be breakdown using water molecule. अब इसको समझो, देखो इसको समझो. To join up, to join up, or rather, if I'm going to join up two or more monosaccharides together, I'm building up something, right? It's going to give me a disaccharide along with water molecule. This forward process is going to be called as condensation. जब भी चीजें बिल्डअप हो रही होती है ना, वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है. हम लोगों ने ये एंजाइम्स के अंदर पढ़ा था, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक. कोई भी रिएक्शन जिसमें चीजें जुड़ रही हों या बड़ी हो रही हों, एनाबॉलिक. कोई भी प्रोसेस जिसमें चीजें टूट रही हों, कैटाबॉलिक. तो यहाँ तो मोनोसैकेराइड्स जुड़ रहे हैं अंदर, गिविंग मी लार्जर डाइसैकेराइड. तो क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गई. कंडेंसेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन.
But if I would now have disaccharides and I would want to break them down using water, what would the disaccharides break down into? The very same thing that they were made up of. They are going to break down in and give rise to the monosaccharides again. Now I'm using water to break down the disaccharide, giving me smaller monosaccharides. This process is called as हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है. यहाँ चीजें टूट रही हैं, राइट? सो बिल्डअप ऑफ मोनोमर्स इनटू डाई या फिर पॉलीमर्स, कंडेंसेशन. ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स या फिर डाइमर्स बैक इनटू मोनोमर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. फजर बेटे, सैरिश बच्चा, ओबामा, डू वी गेट दिस? यहाँ तक बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत? Yes, sir. ऑलराइट. अच्छा अब देखिए. तो अगेन सो फार वी नो 6 कार्बोहाइड्रेट्स बाय नेम. अब ये तो हो गई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? 6. कौन कौन सी? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स. अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की. रूल ऑफ थ्री, राइट? 3 monosaccharides, 3 disaccharides. We'll talk about how many polysaccharides. 3 polysaccharides. हमारे पास 3 polysaccharides होती है. कौन कौन सी? नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन एंड नंबर 3 सेल्यूलोज. एक बात याद रखिएगा, ये जो मेरे पास शुरू की 2 पॉलीसैकेराइड्स है ना, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों, इनका काम क्या है? आई एम गोइंग टू मेक यू राइट दिस डाउन, डोंट वरी. अभी बस एट द बैक ऑफ द माइंड ये बात याद रखो कि व्हाट्स देयर पर्पस. देयर पर्पस इज टू एक्ट एज शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोर. What do we mean by short-term energy store? Let's say uh, I woke up at 6, I had breakfast at 7, and then from 7 onwards, I haven't eaten anything till 2, right? So during that, and I was working during that time as well, from 7 in the morning till 2 in the afternoon. So would my body not, or would my cells not need energy? They would, they would, right? Where, so if I'm not eating anything, where is that energy coming from? सो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो. ये बात आगे जाके हम लोग और करेंगे. लेट्स से ये मेरा लिवर है फॉर एग्जांपल, ठीक है? एंड दिस इज अ ब्लड वेसल नियर माय लिवर, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट बीवी राइट हियर. ब्लड वेसल है. अच्छा, व्हेन आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 a.m., मतलब I had a real good breakfast, a breakfast which was rich in carbohydrates. So I had a very sweetened coffee, I had a slice of mud cake, right? So the glucose in my blood that I consumed in the glucose which was coming from a breakfast, when I'm going to eat it from the digestive system, is going to go into the blood. The concentration of glucose in my blood is going to increase. I don't want excess glucose in the blood. ब्लड के अंदर एक ग्लूकोज का पर्टिकुलर अमाउंट होता है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है. नॉर्मल इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? जब भी उनकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होती है, इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग और लेमैन टर्म्स में देखें, उनकी जब शुगर ज्यादा होती है, बॉडी खुद ब खुद ही इस ग्लूकोज को किधर ट्रांसपोर्ट कर देती है? लिवर के अंदर. ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, राइट? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ज्वाइन अप करके एक पॉलीसेकेराइड में स्टोर हो जाते हैं. तो ये कौन सा वाला प्रोसेस होगा बच्चों? कंडेंसेशन. ठीक है? फिर मेरी जो ब्लड की ग्लूकोज होती है वो नॉर्मल हो जाती है. लेकिन लेट्स से आई एम वर्किंग अ लॉट एंड माय मसल्स आर कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग. अब जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सारा मसल इस्तेमाल कर रहा है, so that it could carry out its function. Now if the glucose in the blood
is being used by the muscles or any other part of the body, what will happen to the concentration of glucose? Any ideas? Decrease. It will decrease. Very good. भाई मेरे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज ना कम होना शुरू हो जाएगी. अच्छा अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब I would obviously need more energy. But again, as I told you, I hadn't eaten anything till 2 p.m. or let's say 5 p.m. Right? तो भाई अब क्या होगा? ये जो मैंने पॉलीसैकेराइड स्टोर करा हुआ था ना, अब ये क्या करेगा? इट विल अंडरगो व्हाट प्रोसेस? हाइड्रोलिसिस. और ये दोबारा क्या बनाना शुरू कर देगा? ग्लूकोज. तो जो मैंने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाई थी ना सुबह नाश्ते के अंदर, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो मेरी बॉडी में कैसे स्टोर हो गई थी? एज पॉलीसैकेराइड. दिस इज व्हाट आई मीन बाय द वर्ड शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोर. डू वी गेट दिस? ये वाली बात समझ में आई बच्चों? अगर नहीं समझ में आई बता दो. आई एक्सप्लेन दिस अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. Sir, जी मेरा बच्चा. can you say like they are reusable? व्हाट बेटे? These sugars, can you say that हाँ नहीं are नहीं नहीं. they reusable? नो 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 नो, वी कांट से रीयूजेबल. क्योंकि देखो बेटे हो क्या रहा है. व्हाई डू आई नीड दिस ग्लूकोज? होता क्या है? अब फॉर एग्जांपल, आई हैड 1,000 molecules of glucose initially. Out of these 1,000, 800 molecules were stored as polysaccharide. ब्लड के अंदर सिर्फ कितने रहे? 200. ठीक है. अब ये 200 molecules मसल ने यूज अप करे और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में. एंड व्हाट डू आई डू विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड? आई ब्रीथ इट आउट. क्लियर है? राइट? Yes, sir. अच्छा. तो भाई मेरे पास ये जो ब्लड में 200 molecules ऑफ ग्लूकोज थे ये तो खत्म हो गए. लिवर के अंदर कितने स्टोर हुए हुए थे? 800. 800. वेरी गुड. अब इस 800 में से 200 मॉलिक्यूल्स ना दोबारा ब्लड में चले गए. अब लिवर में कितने बच गए? 600. 3 घंटों के अंदर ये वाले भी ये वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मसल ने रिस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. लिवर से फिर दोबारा क्या हुआ? 200 मॉलिक्यूल्स आ गए. फिर 2 घंटे बाद दोबारा 200 मॉलिक्यूल्स आ गए. Sir, अल्टीमेटली लेट्स से बाय एक मिनट बचा, बाय 6 p.m. all the molecules of glucose or that were stored as polysaccharides in the liver were finished. बात समझ में आ रही है? yes, sir. Sir, अब बोलो. like, is there any specific capacity of like storing glucose in like any part of the In body? mammals, yes, we'll talk. We'll see अभी 2 मिनट के अंदर कि मतलब where do we store it? Yes, there is a particular capacity. After which, but my body loves glucose. My body loves glucose so much. वो कहता है अच्छा भाई जितना ग्लूकोज मुझे दोगे ना, I'm going to store it in one form or the other. Right. Let's say you guys, take me out on, let's say, on lunch, for example. ठीक है. अब क्या हुआ भाई? Abru gets me a chocolate frap. Aisha gets me, let's say, some cheesecake. Fajr ने क्या करा? Fajr gets me a chocolate shake. 1 घंटे बाद, once I was done with the food, हरमीन ने क्या करा? मुझे पिज्जा ऑफर कर दिया. Right. All of these substances, they contain carbohydrates in one way or the other. अब भाई क्या हुआ? जब मैंने वो केक खाया था ना, जब मेरे इतना ज्यादा ग्लूकोज हो गया था कि मेरी बॉडी में जो ग्लाइकोजन की कैपेसिटी थी ना, वो खत्म हो गई थी. अब माय बॉडी सेट क्योंकि आई कैन नॉट स्टोर एनी मोर ग्लाइकोजन. तो फिर मेरी बॉडी ने क्या करा? जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी ना, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फैट्स में. दिस द रीजन व्हाई वी से मीठा खाने से मोटे हो जाते हैं. बिकॉज एक्सेस ग्लूकोज अल्टीमेटली विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स. हमारे जो एथलीट्स होते हैं, दे they have a very low intake of carbohydrates.
If you would want to go on a weight loss journey, and if you would go to a nutritionist, they would not ask you to cut down on your fats first. वो कहेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट खत्म करो पहले. जब मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा ना, जो भी मेरी बॉडी का फैट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होके इट विल बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. राइट? रमजानों में क्या होता है? लाइक वी डू गो वेट लॉस ड्यूरिंग रमजान. Why do it? What happens? All throughout, when you're not consuming any glucose after sehri for very long periods of time, all the glucose or all the polysaccharides they've been used up. And but the body still needs energy. The body starts converting the fats into glucose and then starts respiring it to produce energy. तो खैर एक ही चीज थी, खैर ये चीज थी. We are not going to Yes, sir. Thank you. डिटेल्स. यू वेलकम. खैर अच्छा, अब देखो. अब हमारे पास ये जो पॉलिसी, तो वी गेट दैट वो मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म स्टोर, राइट? 12 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, एट द मैक्सिमम 18 घंटे, उससे ज्यादा नहीं. खैर अच्छा, हमारे पास दो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. कौन कौन से? स्टार्च और ग्लाइकोजन. स्टार्च हमारे पास जो होता है, इट्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स. जी सैरिश बच्चा, यू हैव अ क्वेश्चन? Sorry, what you just जी taught जी. right now हाँ about हाँ like the liver and glucose and all and हाँ how it's stored. Um, हाँ. for this topic, do we need to remember it नो, राइट or? राइट नाउ नो, राइट नाउ नो. राइट नाउ देखो, Acha, whatever I'm doing on the sides now, right now it's not important. okay, As we'll okay, proceed with the syllabus, we'll get, हम लोग इंसुलिन ग्लूकागॉन पढ़ेंगे ना, जब पूरा मैं सब एक्सप्लेन करूंगा इसको. ठीक अभी है. just need to Thank you, keep this sir. at the back of the mind. You're welcome बच्चा. अच्छा जी, अब देखो, अब क्या होता है. स्टार्च हमारे पास is one of the polysaccharides. It's present only in plants. I can digest, I can hydrolyze. As a mammal, I can break it down, but I cannot produce starch because apparently I'm not a plant. Where in the plant is starch present? In its chloroplasts, in the roots and the stems, and in the seeds. So that's I'm eating spinach. Spinach is giving me some sort of nutrition. It's going to give me some sort of carbohydrates. Spinach is a leaf. Leaf has chloroplasts. I'm going to get the starch from there. I'm going to eat bread. Bread comes from wheat. Wheat के seeds होते हैं. I'm eating dal. I'm eating chawal. They all contain starch. Why? Because they're seeds. I'm eating a carrot. Carrot is a root, right? All of them would contain starch. Khair. In animals and fungi, they store glucose as glycogen, not as starch. Excuse me. अच्छा, animals के अंदर glycogen किधर store होता है? In the liver and in the skeletal muscles. As the name suggests, what are skeletal muscles? Muscles present on the bones. Voluntary muscles होते हैं जो bones के ऊपर present होता है. खैर, फिर हमारे पास एक तीसरा कार्बोहाइड्रेट आता है, पॉलीसेकेराइड आता है, जिसका एनर्जी स्टोरेज से कोई काम नहीं है. वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है. और वो क्या बनाता है? वो प्लांट की सेल वॉल बनाता है, राइट? उसका नाम क्या है? सेल्यूलोस. So cellulose is a structural carbohydrate that makes the plant cell wall. Starch and glycogen are good short-term energy storage molecules. This good term energy store. All right. यहाँ तक कोई मसले बच्चों? अच्छा. One thing that we need to remember before we move on is that all the monosaccharides that we have and all the disaccharides that we have, they're sweet and they're soluble. The polysaccharides, on the other hand, are insoluble and they do not taste sweet. Up, there's this question that uh, bothers the examiner, and it obviously was bothering me as well when the first time I studied this thing. And the question was, okay, we are storing glucose. देखो, usually when the glucose consume कर रहा हूँ ना,
So why can't I simply store glucose as glucose? Why not store glucose as a monosaccharide? Let it just stay as monosaccharide in the liver or wherever you want to store it. Why do I have to convert it into glycogen in my body? Why do the plants have to convert that glucose into starch in their body and then store it? Right? तो सवाल क्या बनता है हमारे पास? The question is कि भाई why glucose cannot be stored as a monosaccharide? कहने का मकसद क्या हुआ? Why do I have to convert glucose into a polysaccharide and then store it? Right? इसके तीन reasons हैं बच्चों. There are three reasons for it. Number one, glucose is a very good. It's a soluble sugar. Number two, it is very reactive. And number three, which is very self-explanatory, it takes up a lot of space. अब इन तीनों को देखते हैं. अब जल्दी से पुराने वाले बच्चों मुझे ये बता दो, anything that is soluble, would it be considered as a solute? If anything that is soluble, are you going to consider that thing as a solute? Yes, you are. What are solutes? Anything that is soluble in water. Abdullah, anything that is soluble in water is a solute. So if glucose is soluble in water, it's a solute, isn't it? It's okay, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. गलतियां करो जितनी करनी है. Just learn from them. खैर, अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर ग्लूकोज आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और ग्लूकोज क्या है? It's spreading throughout. It's spreading throughout. So there is a high concentration of glucose inside the cell, and there is less concentration of glucose in the fluid outside the cell. Cell के अंदर भी एक fluid होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Cytoplasm. अब मुझे एक बात ये बताओ. So again, another question. So we just decided that glucose is a solute, right? किसी भी solution के अंदर, if the concentration of solutes increase compared to water molecules, what happens to the water potential? Solute बढ़ गया compared to water. Very good. The water potential decreases. तो भाई मेरे पास सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. बाहर वाला सोल्यूशन जो है उसके अंदर ग्लूकोज रिमूव हो रहा है. द ग्लूकोज इज मूविंग आउट. तो यहां मेरे पास उल्टी चीज हो जाएगी. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वाटर बढ़ जाएगा, तो बाहर मेरे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है. So what's going to happen? Water molecules from the outside are going to move in down the water potential gradient through a partially permeable cell membrane by the process of osmosis, causing the animal cell to swell up and burst. There is this condition that we call as diabetes. ना ना हिबा, ग्लूकोज तो डिफ्यूजन से एंटर कर रहा है. ग्लूकोज तो डिफ्यूजन से एंटर कर रहा है. I'm sorry if I made the label wrong. Water molecules move in via osmosis in the. अच्छा खैर, diabetes. So have you ever heard about diabetes or what diabetes is? Do you have anyone जिसने कोई नाम ही नहीं सुना हो diabetes का? It's sugar जो बीमारी होती है. So is diabetes a good thing or a bad thing? It's a bad thing. Very good, right? Now, diabetes में होता क्या है? जो ग्लूकोज होता है ना ब्लड का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी बढ़ जाता है और ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है.
And this is why it's dangerous. It may cause the cells to burst, it may cause the cells to shrink, so on and so forth. ठीक है? तो since it's soluble, आसान सी बात, since it's soluble, ये क्या करता है? It disturbs the what of cell? Water potential of cells. Right? Something that I don't want. अच्छा, दूसरी चीज इट इज रिएक्टिव. देखो पता है क्या, मेरा सेल जो है ना, वो कहता है भाई जैसे ही ग्लूकोज आए ना, as soon as glucose enters, what I want to do is I want to put it into the mitochondria. Now, as soon as glucose would enter into the cell, it would go into the mitochondria and get out of the cell as carbon dioxide. Right? Let's take an example. Let's take an example. We all have that one rishadar, usually our pupos, uh, who would, we don't want them to linger around. So if once in a year they would come at our place on Eid, we can tolerate them as long as they hand us the Eid ka lifafa. But as soon as the lifafa is in our hand, we are on our toes. Ki, "Yar, ye kab jayenge?" Go already. Why are you here? So, इसी तरीके से, the same is the case with glucose. Cell does not like glucose to be lingering around. वो कहता है भाई जैसे ही आए ना, mitochondria में भेजो and let it go out. The reason is glucose is reactive, like some purpose. So what happens is, since it's reactive, it disturbs the chemical reactions of the cell. It disturbs the cell chemistry. कभी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा या उसको ऑल्टर कर देगा, सेल डिवीजन के अंदर मसले कर देगा, so on and so forth, right? And दूसरी बात क्या, it takes a lot of space. It Sir, scatters around. जी मेरा बच्चा. sir, why it disturbs like the cell chemistry? उसका How? नेचर, उसका रिएक्टिव नेचर है ना. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूँ कि you know if I would have oxygen and if I would have methane gas, and if they would get a little amount of heat, or if their activation energy is reached, what's going to happen is the whole reaction is going to catch fire because they are reactive. बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज बेसिकली Yes. क्या करता है, इट इज वो फॉस्फेट, आगे जाके पढ़ोगे, वो फॉस्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करता है, वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, and it can add up and join up with the proteins and alter their shape, so on and so forth. खैर, तो छोड़ो. अच्छा, अब एक Sir, चीज देखो. जी बच्चे. sir, are all sugars having like the same properties? All, no, not all all monosaccharides, yes, all monosaccharides. हम तो ग्लूकोज को, क्योंकि बिकॉज ग्लूकोज हमारा प्राइमरी वो शुगर है ना जो हम लोग रिस्पायर करता है, that's why we're talking about glucose over and over again. But this applies to all monosaccharides, glucose, fructose, galactose. अच्छा खैर, अब इसको देखो. जी सर, बच्चे. Sir, हम्म this might be a bit silly question, but There are like no silly questions, बेटे. जैसे question लिखा हुआ है कि हाँ why can't like glucose be stored as a monosaccharide? हाँ I हाँ. can't understand, like I can't comprehend the Okay, question okay, quite okay, well. okay, okay, okay. Give me a minute. I'll explain that. Just give me 1 minute. Okay. Okay, sir. All right. अच्छा. अच्छा, अब देखो. खैर, let's understand the last point first, then I'll come to that question. It takes a lot of space. अब देखो कहने का मकसद क्या हुआ. Let's say भाई I have a classroom where all these yellow dots are the chairs. Now what I want to do is I also want to bring a couch into this particular classroom. I cannot because the chairs are scattered over each other. So what I would do is I would take all those chairs, stack them over each other, right? And push them in the corner. Now I'll have a lot of space in which I can not only bring one but maybe bring 4 couches. तो इसी तरीके से बेटे ग्लूकोज जो है ना, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, सेल में स्कैटर हो जाता है और जगह घेर लेता है. ठीक है. So that's why we say it takes up a lot of space. खैर खैर खैर.
ये सवाल क्या है कि भाई why is glucose stored as a monosaccharide, not stored as a monosaccharide? देखो बेटे, हमने क्या कहा था when we were talking about polysaccharides बच्चे, कि polysaccharides हमारे पास जो है उनका काम क्या है मेरा बच्चा? The first two, starch and glycogen, what are they acting as बच्चे? Sarish, what's their use? Storing energy. Very good, they're a short term energy store. कि हाँ, जब मेरे whatever the glucose that I would have to save, if I am consuming extra glucose and if I would have to save the glucose for a short period of time, how, in what form am I going to save them? I'm going to save them in form of what? Starch and glycogen. In other words, both of them are what by nature? Poly? Polysaccharides. Very good. अब बात समझ में आ रही है? जी जी. तो मैं ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा हूँ बेटे? एज पॉली? Polysaccharide. वेरी गुड. बात यह है कि भाई why do I need to convert glucose into polysaccharides such as starch in plants and glycogen in animals? Why can't I just let glucose be? Why can't I store glucose as glucose? Why do I have to, before storing, why do I have to convert it into glycogen and starch? बात समझ में आई आपको? Cause it's like जी जी soluble वगैरह आपने वेरी जो भी गुड. बताया. यस यस यस. ठीक है. अब इस क्वेश्चंस को ना कभी कभार हम लोग रिवर्स इंजीनियर करते हैं और हम लोग कहते हैं कि भाई चलो ओके फाइन, ग्लूकोज कैन नॉट बी स्टोर्ड एज अ मोनोसेक्रेट, सो व्हाई आर polysaccharides a good energy store? So I can't store glucose as a monosaccharide because glucose is not a good energy store. So why are polysaccharides good energy storage molecules? इनकी क्या properties है that allows me to store glucose as polysaccharides? The reverse three. Number one, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? They are insoluble. Very good. Very good. Since they are insoluble, they will not alter the water potential of the cell. When the water potential of the cell is not going to be altered, there is going to be no osmosis. Number two, they are inert. Inert का मतलब क्या होता है? Unreactive. Since they're unreactive, they are not going to react with the, or they're not going to, let's say, interfere with the chemical reactions that are already going on inside the cells. In other words, in shorter words, they're not going to disturb the cell chemistry. And number three, these guys are compact. Let me give an example. All of this glucose that is scattered into this cell that I'm raising just right now, right, can be converted and stored as a molecule, a highly compact, highly branched molecule of glycogen like this. पहले पूरा जो ग्लूकोज था वो पूरा सेल में फैला हुआ था, राइट? अब क्या हुआ जब मैंने उसको ज्वाइन अप कर दिया? रिमेंबर दोस चेयर्स दैट वर स्टैकिंग अप ऑन टॉप ऑफ ईच अदर so that I could have more space to bring a couch in my classroom, which I would love sometimes. Do we get this? Excuse me. हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? Any problem so far? चलो अब आगे चलते हैं. Now with this we are done with the carbohydrates. ठीक है, इसके जो फूड टेस्ट है हम लोग बाद में बात करेंगे. अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. अच्छा, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? व्हाट आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, स्पेशली ग्लूकोज, इट इज द मॉलिक्यूल, इट इज द कंपाउंड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हम कहते हैं इट्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. चीपेस्ट इन व्हाट सेंस? चीपेस्ट इन व्हाट सेंस?
कि it's very readily available. अब मुझे एक बात ये बताओ, if I would hunt an animal, for example, let's go back to uh, Stone Age, and let's have spears and let's hunt some woolly mammoths. Is it going to take me to, or is it going to be easier for me to pluck an apple off a tree and get energy, or to hunt down a woolly mammoth and then consume it and take the energy? मेरी एनर्जी ज्यादा स्पेंड किधर हो रही है? हंटिंग के अंदर. So I'm spending energy, and then I'm getting, once I'll eat the animal, then I'll get the energy, right? So it's comparatively very easy to obtain carbohydrates compared to fats and lipids. For that reason, we say that carbohydrates are the cheapest source of energy. Since they're reactive, they can be used for the process of respiration. Some of the carbohydrates, not all of them, or rather one of them, अगर हम लोग और specific हैं, अच्छा, अब now we're done with the carbohydrates. Uh, Abdullah, we're talking about hunting, wild animals, and that too without the guns. Hee hee. Okay, we're talking about hunting with spears and stuff. Khair. Acha, now that we move on with the second molecule that we have, second biological molecule that we have, fats and lipids. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले before we move on with anything, what we are going to do is, we are going to differentiate between these two. We are going to differentiate between the fats and the lipids. All right? फैट्स हमारे पास क्या होते हैं, फैट्स और लिपिड्स में फर्क क्या है? फैट्स और लिपिड्स में फर्क क्या है? फैट्स जो हमारे पास होते हैं ना, दे आर सॉलिड इन कंसिस्टेंसी, एक तरह से, और सेमी सॉलिड्स जेली लाइक, उर्दू में जैसे हम लोग कहते हैं चर्बी. लिपिड्स हमारे पास जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लिक्विड्स. दे बेसिकली ऑल द ऑयल्स. दूसरी बात, वेयर आर फैट्स, और वेयर वुड यू फाइंड फैट्स? इन एनिमल्स ओनली, राइट? लिपिड्स किधर मिलेंगे? वेयर आर यू गोइंग टू गेट ऑयल्स फ्रॉम? Sesame seed oil, canola oil, coconut oil, olive oil. What's the source of all of these oils? Plants, right? Can animals produce oils? No, we can't. Really? Do I have oil on my skin? Yes, I do, right? So lipids can be produced by, or it can be found in both animals and plants. ठीक है? ये छोटा सा डिफरेंस है. फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं ना बेटे, they are also polymers, and they will also be made up of monomers. फैट्स और लिपिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अस मोनोमर्स हमारे पास जो फैट्स और लिपिड्स के होते हैं, दे आर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स joined up joined up with one molecule of
ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। नाउ रिमेंबर दिस, ट्राई टू रिमेंबर दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं समझ में आ रहा, कोई मसले वाली बात नहीं है। व्हाट हैपेंस इज, why one molecule of glycerol, why three fatty acids? ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मैं इसको बायोलॉजी में समझा रहा हूँ ताकि हमारे लिए आगे वाली चीज आसान हो जाए। इट्स वेरी इजी, इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट। व्हाट हैपेंस इज बेटे, मेरे पास ये जो ग्लिसरॉल है ना, ये हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल होता है। इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज अल्कोहल्स, नॉट द कंज्यूमिंग वाला अल्कोहल, राइट। फैटी एसिड्स जो होते हैं, all the acids that amino acids for example, right, they contain a carboxylic group, COOH. I'll show you, I'll write it down for you कौन सा वाला ग्रुप होता है। they contain a carboxylic group, इसको समझिएगा प्लीज, ठीक है। होता क्या है, alcohol and fatty acids react together, or carboxylic groups react together to give us water। ठीक है, कैसे, इसको देखिए, इसको देखिए। अगर मैं देखूं ना कि मेरे पास एक ग्लिसरॉल कैसा दिखता है, glycerol is a very special alcohol, right? It looks like this. इसके पास क्या है बेटे, OH है, ठीक है। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, they have COOH, right? ये क्या है क्या नहीं है, COOH, छोड़ दो उसको, right? होता क्या है, let me just move them a bit right here. अच्छा, अब देखिए होता क्या है, इसको बस देखिए। अगर मैं ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ग्लिसरॉल से मैंने क्या रिमूव करा बच्चों, हाइड्रोजन, और मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये OH रिमूव कर दूं, राइट, तो मैंने क्या बनाया, आई joined up an H and OH. What would I get if I would join up an H and OH? ऐड कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, OH2, उसको थोड़ा सा उल्टा करो हेबा, OH2, वेरी गुड, इट्स गोइंग टू गिव मी H2O। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाती है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन अप हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, मैं इस ग्लिसरॉल में से कितने हाइड्रोजन निकाले, 3, राइट, ऑल राइट। मैंने फैटी एसिड में से कितने OH निकाले, 3, और so 3 OH and 3H are going to give me 3 molecules of what, H2O, by the process of condensation। अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, and I'm going to get a molecule like this, right? This molecule, so whenever अब देखो whenever we add up 3 molecules of fatty acids with 1 molecule of glycerol, the resultant molecule that we get, the polymer or the larger molecule that we get, is called as a tri 3 1 2 3 glyceride, right, along with how many molecules of water, 3। अब बात यह है कि सर हम तो पढ़ते फैट्स और लिपिड्स, ये ट्राइग्लिसराइड क्या मखलूक है, व्हाट इज दिस ट्राइग्लिसराइड,
All right. Now, what happens is देखो triglycerides molecules जो होते हैं ना, the smaller fat molecules. अब होता क्या है, ये मेरे पास छोटे छोटे ना, कभी कभार अगर हम लोग सूप पिए या फॉर एग्जांपल इवन इफ वी ईट सालन एट आवर हाउसेस, जो ऑयल होता है ना उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. When these droplets, when they join up to, or when they collide with each other, when these droplets, when they collide with each other, like bubbles, they do not pop. ये pop नहीं करते. Bubbles की तरह ये pop नहीं करते. Instead, जो हमारे पास oil होता है, it joins up together to give you an even larger droplet, right? So when many molecules of triglyceride join up together, they are either going to give you a what? A fat, और either it's going to give you a lipid. अगर उसकी स्टेट सॉलिड होगी तो फैट बन जाएगा, अगर स्टेट लिक्विड होगी तो वो क्या बन जाएगा, लिपिड बन जाएगा. इतनी सी बात है बच्चों, राइट. बस हमें जो मेजर बात याद रखने वाली है वो क्या है, कि भाई हमारे पास फैट्स और लिपिड्स कैसे बनेंगे. To make a single molecule of fat or lipid, you're going to have to use up 3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है. Yes, sir. Sir, when ऑल did you राइट. have our test?